समस्त को मोर नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज गोटे सेशन स्टार्ट करने जाऊँगी जो थे कि मैंने ये 12th क्लास रो फिजिक्स डिस्कशन करवा ने सब चैप्टर तो मु गोटे वीडियो रे देखै पारिबिनी जितकी भी हम आम फर्स्ट डिस्कशन करवा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट आम जानीदबा माने आमर कन्वर्शन केमती सब अच्छी आमर कितना टाइप्स अच्छी 16। तो फर्स्ट आसला डेसी डेसी 10 to the power -1 हम, सेंटी 10 to the power -2, मिली 10 to the power -3, माइक्रो 10 to the power -6, नैनो 10 to the power -9, पिको 10 to the power -12, फेमटो 10 to the power -15, आटो 10 to the power -18, डेका फर्स्ट मन रखिदेवा देन डेका डेका 10 to the power 1, हेक्टो 10 to the power 2, किलो 10 to the power 3, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, टेरा 10 to the power 12, पेटा 10 to the power 15, एक्सा 10 to the power 18। देन डायमेंशन जोटा कि कॉमन समस्त जानिबा उचित तो सेटा भी मैं मेंशन कर देछि, देखि दियंतु। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समान ही आसबो L1 M0 L1 T0 ताको हमें कॉमनली नबानी L1 ही हमें कहि परबो कॉमनली। स्पीड और वेलोसिटी भी सेम तार होला LT -1, एक्सेलरेशन LT -2, देन फोर्स M1 L1 T -2, वर्क M1 L2 T -2, पावर M1 L2 T -3, एरिया L2, वॉल्यूम L3। ये सब कॉमन जिन आम जमी भी आम ये मन रखा दरकार, ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट आम मूव करवा आमर चैप्टर को। देन आमर फर्स्ट चैप्टर अच्छे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने कौन बुझा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of rest charge। रेस्ट चार्ज आमको स्टैटिक्स माने कौन? स्टैटिक्स माने रेस्ट ही थी ना, बॉडीटा आमर ऑब्जेक्ट ही रेस्ट रे थी ताको आम कौन कहवा? रेस्ट चार्ज। ताको कहवा आम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज कौन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। Then it is denoted as Q. Charge is a scalar quantity, मन रखिबा। Then charge dimension 80, यूनिट अच्छी चार्ज रो SI यूनिट CGS यूनिट। SI यूनिट कौन? कूलम। तब CGS यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अच्छी CGS रो। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टार्ट कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है आप कूलम। देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। ये समस्त जना किंतु ये जना अच्छे 1 कूलम के स्टार्ट कूलम, 1 कूलम के आप कूलम। 1 कूलम 3 × 10 to the power 9 स्टार्ट कूलम, 10 to the power -1 आप कूलम। टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज मैंने बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन जो गोटे बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लूज कर कौन कहवा ताको पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कला से नेगेटिव चार्ज कहवा। ओके, टाइप अच्छी सिमिलर लाइक चार्जेस, डिसिमिलर अनलाइक चार्ज आमर के इम्पोर्टेंट नुह। सेमती इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देन मूव करवा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज प्रॉपर्टीज कौन कौन? 3टा प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट, similar charges repel to each other whereas dissimilar charge attracts to each other। इटा समान चार्ज सब बेले रिपेल करेबे, एटा समस्त जणा अछि, किंतु दुटा अपोजिट चार्जेस सब बेले अट्रैक्टिंग करेबे। किंतु हम जति पैरेलल हमर अच्छा को कैपेसिटेंस टाइम देखिबा तो बेले दुटा पैरेलल रे थिबे तो बेले हम देखिबा कि दुटा चार्ज से मैंने परस्पर को अट्रैक्ट कर सामान दुटा सामान चार्ज परस्पर को अट्रैक्ट कर दुटा डिसिमिलर चार्ज परस्पर को रिपेल कर उल्टा हो यार उल्टाटा।
Then second, the charge is conserved. That is, charge neither be destroyed nor be created. It can be transferred from one body to another body. चार्ज सब कंजर्व हो रहा है. चार्ज के भी डिस्ट्रॉय हेनी के क्रिएट हेनी. थे डिस्ट्रॉय कर के क्रिएट हो पारे. तो से आम संरक्षण कर रखा दरकार. ओके, यहाँ ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ये रिएक्शन मन यूरानियम 92-235 प्लस 0N1 gives barium 56-141 plus krypton 36-92 plus 3 0N1 into neutron. Then देखिए the total third point, the total charge of a body is equal to an integer multiplication of basic charge of electron, which is also known as quantization property of charge. Quantization property मैंने मान रखिए integer multiplication अब Q equal to plus or minus Ne. N है number of electron, E कौन charge of electron. हम जानिए 1.6 × 10⁻⁻19. सब हमारा न्यूमेरिकल्स अच्छी गोटे न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा. अभी हमें थ्योरी पढ़ा. मेथड ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग रो तीनटा मेथड देखि परथबे. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग: फ्रिक्शनल, कंडक्शन, इंडक्शन. देन गोटे गोटे करके हम डिस्कशन करबा कौन कौन. फ्रिक्शनल मेथड, टू न्यूट्रल बॉडीज रफ टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. देन न्यूट्रल बॉडी परस्पर को घसी जिते न्यूट्रल बॉडीज रफ टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. जानिए कंडक्शन मेथड कौन. When a neutral body touches with a charged body, then the charge flow from charged body to neutral body. गोटे न्यूट्रल बॉडी जो गोटे चार्ज बॉडी सहित टच हम तबले चार्जटा फ्लो होगी जोटा कि चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी फ्लो होगी आसब चार्जटा. द फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स साइज ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द बॉडी. तो बॉडी साइज ऊपर डिपेंड कर कोटा चार्ज फ्लो. ओके, न्यूमेरिकल्स. देन एपटे इंडक्शन मेथड देखो पूरा ड्रॉइंगटा तार पूरा पॉजिटिव चार्ज ये हूँ न्यूट्रल चार्ज. ये किसी भी चार्ज नहीं माने न्यूट्रल अच्छी ये पॉजिटिव चार्ज अच्छे. तापर ये आम आर्थ्स सरफेस आम को ड्र कले पॉजिटिव तो रिपेल कर इधर अट्राक्ट एपटे नेगेटिव रखा एपटे पॉजिटिव रखा. देखो ये आम क्रिएट होगा. पढ़ीदेव कौन लिखाई थ्योरी. व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी टेक्स क्लोज नहीं हम मैंने टच कराबनी. कंडक्शन आम कौन देखी टच कर क्लोज आम आने आयन्स ऑफ न्यूट्रल बॉडी सेपरेटेड. न्यूट्रल बॉडी रे आयन्स जी अच्छी सेपरेट हो गले. आफ्टर अर्थ द न्यूट्रल बॉडी गेटिंग अपोजिट चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी. अपोजिट चार्ज हो गले ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गले दुटा परस्पर अट्राक्ट करेंगे. देन linear charge distribution. When charge distributed over the length of conductor is known as linear charge distribution. चार्ज जो कंडक्टर लेंथ ऊपर डिपेंड करे तब linear charge distribution कहते. कोएफिशिएंट कौन लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल. एसआई यूनिट लैम्डा कूलम बाय मीटर और कूलम मीटर ऊपर गले इनवर्स होगा. डायमेंशन है L-1 T1 A1. देन तापर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन अच्छी एरिया ऊपर सरफेस ऊपर डिपेंड करिवो. व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कोएफिशिएंट है बीटा सॉरी कोएफिशिएंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए. एसआई यूनिट है कूलम बाय मीटर स्क्वायर. Dimension L-2 T1 A1. Then volume charge distribution. When charge distributed over the volume of conductor is known as volume charge distribution. Coefficient है rho equal to Q by V. SI unit है coulomb per meter Q. Dimension है M0 L-3 T1 A1. Then electric permittivity. Electric permittivity कौन है? The factor which keeps the amount of charge flow in a
medium is known as electric permittivity. The factor which keeps the amount of charge केते charge flow है गोटे medium रे ताको हम electric permittivity. It is not denoted का द्वारा करबा epsilon. Epsilon रो unit ला Newton and epsilon रो unit होची Newton inverse meter minus 2 coulomb square. Dimension m minus 1 l minus 3 t4 a2. The unit of epsilon is Newton inverse meter minus 2 coulomb square. Dimension m minus 1 l minus 3 t4 a2. Then note as law for air medium, the electric permittivity epsilon 0. Unit epsilon 0 f by m. Value है 8.854 in 10 to the power minus 12 Newton inverse meter minus 2 Newton inverse meter minus 2 coulomb square. Dimension of epsilon 0 जहाँ epsilon था m minus 1 l minus 3 t4 a2. Then dielectric constant or relative permittivity. It is defined as the ratio between electric permittivity of any medium to air medium. It is denoted as epsilon r or k because the mathematical epsilon r equal to k equal to epsilon by epsilon 0. It is unitless and dimensionless. Okay. Then Coulomb's law of electrostatics. This law कहला the electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them. Let F is the electrostatic force between Q1 and Q2, F proportional to Q1 Q2 and F proportional to 1 by r square. From equation 1 and 2 compile last को F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square. And value है 1 by 4 pi epsilon 0 9 into 10 to the power 9 Newton meter square coulomb minus 2. This value 1 by 4 pi epsilon 0 है 1 centimeter square by start coulomb square. And vector form देखिबा vector form रो a and answer will be f12 equal to minus f21. Superposition principle देखंतु. This principle कौन कहला the total force on a charge due to n number of charges equal to vector addition of individual forces. Okay, if equal to f1 plus f2 plus f3 plus up to fn पूरा total force को मैं तार sum addition लिखा है ना ठीक गोटे नोट अच्छी k इक्वल टू epsilon by epsilon 0 इक्वल टू fa by fm माने एयर मीडियम by any medium जो भी मीडियम दे जो देन आसला इलेक्ट्रिक फील्ड the space around a charge in which the electrostatic force is experienced on other charge is known as electric field. It is known as E equal to F by Q0. Electric field is the vector quantity. SI unit है Newton by Coulomb or volt per meter. Dimensional formula दे करिवे m1 l1 t minus 3 m-1 m1 l1 t minus 3 m-. Then electric field due to a point charge रे केते कौन बाहर केते E equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. यार सूत्र होची एटा equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. So numericals. Then it is la electric field lines or electric line of force. The path followed by unit positive test charge inside the electric field is known as electric field lines or electric lines of force. The electric field lines are straight or curve. Straight curve shape. The electric field lines are started from positive charge and end of negative charge, but dipole moment start of a negative charge and end of positive charge.
the direction of electric field on electric field lines कौन होगी tangent to that point देखो tangent रही okay 180 it is most important point two electric field lines never be intersect to each other the electric field lines केबे भी intersect हेबेनी कारण because at the point of intersection there are two directions of electric field is impossible. The electric field lines expand laterally and contract longitudinally. Expand laterally and contract longitudinally. Positive charge रे केमती है electric field lines सब बाहर को तेरे जाइए और negative charge रे देखो तो सब तारु attract है ये इट opposite charge positive negative केमती है it is similar charge positive negative okay then electric dipole two equal and opposite charges separated by a small distance is known as electric dipole small distance to electric dipole thing hobo okay to L distance A to O L distance O to B L distance okay. In electric dipole moment, it is defined as the product of magnitude of either charge and separation between them. It is denoted as P equal to Q into 2L. It is a vector quantity directed negative to positive charge. मैं कहती SI unit है coulomb meter dimension formula है 80L. it is our equatorial line जोटा कि पूरा 90 डिग्री रहइबो एंड समान जोटा जेबो पूरा एक्सियल लाइन ओके देन देखिबा कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन और हम कहब एक्सियल लाइन को कोन एंड इन पोजीशन tan पोजीशन तो सब अछि एंड लास्ट को यार आंसर बाहर पति की E equal to 1/4πε0 to P by RQ आउ इक्वेटोरियल लाइन कौन करिए डाइपोल सॉरी ब्रॉड ऑन पोजीशन और tan बी पोजीशन एटा हमर आंसर बाहरिबो हाँ इक्वल टू 1/4πε0 P by RQ सेटिला 2P एटा P बट सेम यार रेशियो केते बाहरिबो 2:1 ना को रेशियो करिके देखि नेबे 2:1 ही मारिबो टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कोन एटा पॉइंट to equal and opposite forces acting on different line produce torque produce करें tau magnitude of either force into perpendicular distance between them tau equal to PE sin theta tau equal to P cross E tau equal to PE sin theta हमारा cross product then the unit of tau is Newton meter or joule Newton meter और जहाँ joule भी तक होचे dimension formula कौन joule रो work रो m1 l2 t-2 हाँ commonly work done of electric dipole when an electric dipole placed in uniform electric field produce torque then when an electric dipole placed in uniform electric field produce torque and no force so the non-uniform electric field रे जो electric dipole टा place करते हैं that produce force and no torque के difference टा में जान टिके voltage okay exam रे पक्किले हमें confuse होना नहीं तो हमें conceptually and theoretically हमें मन रखी बार बार ओके प्रैक्टिकल भी मन रखले चलिबो किछ कथा नै when an electric dipole placed parallel to the electric dipole टा electric field को parallel लिख देबो ताको हम कोन कहबे stable equilibrium यदि एंटी पैरेलल लिख देबो 180 डिग्री की unstable equilibrium ये सब होला न्यूमेरिकल्स area vector देखिबो the area is a vector quantity directed outward normal SI unit area vector है meter square dimensional है L2 then electric flux